हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पार्ट 9 ऑफ लेह लद्दाख सीरीज़। लेह लद्दाख में हमारा 6 दिन ख़त्म हो चुका है और डे 7 एंड डे 8 हैज़ बिन केप्ट फॉर सेल्फ एक्सप्लोरिंग। मतलब हम लेह और लेह के आसपास के एरिया को बाइक में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम आए हैं स्टोक गोम्पा, which is a Buddhist monastery situated 15 kilometers from Leh। इसमें एक बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। ये मोनेस्ट्री बाहर से जितना ही सुंदर है, अंदर से भी बहुत ही सुंदर है। अंदर गाइड मिलते हैं, वो आपको म्यूज़ियम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंट्री फ़ी 50 रुपीज़ है और विजिटिंग आवर्स 6 AM to 1 PM एंड 1:30 PM to 6 PM है। ये गोम्पा आप 2 घंटे में कवर कर सकते हो। ये है याक का स्किन, इसमें हार्ड ड्रिंक बनते थे और यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं और बहुत सारे इनक्रेव्ड स्टोन्स है, पेंटिंग्स है और इसका इंटीरियर, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है। ये क्यूट सा डस्टबिन तो देखो। ऊपर एक म्यूज़ियम भी है और वो म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर लगा हमें। वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, नहीं तो हम आपको वो म्यूज़ियम भी दिखाते। नाउ वी आर गोइंग टू अ टेम्पल which is just 15 minutes away from this Stok Monastery। वहाँ एक बहुत बड़ा बुद्ध स्टैचू है जिसकी हाइट 71 फीट है। यस, यू हर्ड इट राइट, 71 फीट। और वहाँ एक बहुत ही सुंदर टेम्पल भी है जहाँ प्रिस्ट रहते हैं। वो आपको अंदर लेके जाएंगे और वहाँ के बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। Time to leave this place and we are going to explore more of some village thing. While going to village, we found this 3 पत्तों वाला पेड़। मतलब एक ही पेड़ में 3 कलर्स के पत्ते थे, which is something interesting। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप इधर जाते हो तो ऐसे बहुत सारे पेड़ मिलेंगे आपको। While going back, हम एक आंटी से मिले and she took us to her home and offered us tea, snacks. We visited her garden जहाँ vegetable थे, fruits थे, variety of flowers थे। And she made me wear her Ladakhi cap and this was so sweet of her and the best experience till now. So this was end of day 7 and we are going back to Leh. Now we are ready for day 8, so we are going to Phyang Monastery, which is 20 kilometers away from Leh and located in Phyang village। यहाँ फ्यांग फेस्टिवल होता है
ऐसा सुना है हमने कि जुलाई में फेस्टिवल है और वो बेस्ट टाइम है ये मोनेस्ट्री विज़िट करने का, बट we can't attend everything and we can't see everything, so better to plan your trip according to the best weather month. So we have reached here. Let me give you a quick tour of this Gompa. I'm sure you will be amazed after watching this video because this Gompa is very beautiful. We met a group of people there and we asked them to click our pictures. So I was so afraid of sitting there and I did not allow Mohit to touch me because I was so scared कि मैं गिर जाऊंगी. टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. Now we are leaving for Zorawar Fort, which is approx 20 km from Phyang Monastery. While going to Zorawar Fort, we stopped near Leh Airport just to see flight taking off. Don't know why we are so obsessed with it. So this is Zorawar Fort and also it has museum. Let me give you all a quick tour of the fort and then we will go inside the museum. Zorawar Singh Kaluria was born in 1786 and died in 1841 at the age of 57. He was a military general of Raja Gulab Singh of Jammu and Sikh ruler Maharaj Ranjit Singh of Shera Punjab. He participated in Sikh-Tibetan War. So about museum, here are two rooms. One is artifacts room and another one is history room. Again, rooms के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. ये म्यूज़ियम 11 सितंबर 2006 को रेडी हुआ था. Now it's time to visit our next and last destination,
of our Leh Ladakh trip, which is Hall of Fame. We are going to watch Sound and Light show, which is all about Kargil war. Don't miss it, guys. There are army who perform for us so that we get information about the war. सलाम है सलाम है सलाम है परमवीर चक्र परमवीर चक्र वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय जय हिंद That's all for today's video. We are leaving tomorrow for Pune, and it was wonderful being here in Leh Ladakh. Actually, my best trip ever. We will be posting 2 more videos, which is about cafes we visited in Leh, and another one will be more about Leh market. So wait for it. Till then, bye bye.